ओके, ठीक है। या गुड आफ्टरनून किरण, सबको गुड आफ्टरनून। सो टुडे विल स्टडी न्यू चैप्टर, दैट नेम ऑफ द चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। So before going forward, let us study what is the nature of light. Okay, so there are two primary theories which will let us understand the light or light wave in a better way. Okay, what are those theories? First theory is Newton's corpuscles theory. Okay, what does it say? He proposed, like Newton proposed this theory in 1675. ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ. So he suggested that light consists of tiny particles. Okay, he told that light consists of tiny particles and they are called as corpuscles. Okay, so let me zoom in so that you can see it properly. And that was called as corpuscles, which are emitted by luminous object. Okay, which are emitted by a luminous object. So if a light is coming from an object, he told that in that light there will be some tiny particles, and he named those particles as corpuscles. Okay, and he also told that these particles, these tiny particles or corpuscles, will travel with the speed of light in all the directions. Okay, so what will be the speed of those particles? That will be the speed of light. Okay, they'll travel with the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, acha. He also observed that if you are striking a light wave on any particle, he told that yeah, there will be some energy transfer, there will be some momentum transfer. So he told ki how this energy or momentum transfer will occur. So he suggested that these corpuscles or these tiny particles are responsible for carrying energy and momentum with them. So because of light, if you feel or if you observe that there is an energy transfer or momentum transfer that is going on, he told that corpuscles are the responsible factors. That means these tiny particles will carry energy and momentum with them. So when they strike retina of the eye, they produce sensation of vision. Okay, so because of the energy that these particles carry, when these particles will strike on the retina of the eye, they will produce sensation of vision. Okay, बहुत बढ़िया सर, आगे. So the corpuscles of different colors, ठीक है, अलग अलग, just if you change the color, so the corpuscles of different colors are of different sizes. So color change करोगे, the size of corpuscles will change. Red colored corpuscles are larger than the blue colored corpuscles. ठीक है, so the size of tiny particles in red color will be larger than the particles that are present in blue color. Okay, next theory was, he explained, like he told that using this theory, the reflection of light, refraction of light, and rectilinear propagation of light can be explained clearly. So this theory could explain reflection, refraction, and rectilinear propagation of light easily, okay, in a simplified way. Then, but what was the limitation for this? So this theory couldn't explain interference, diffraction, and polarization of light. That means the wave theory, the wave nature of the light was not being explained using this theory. Okay. Okay, so the speed of light in density, the next theory was the speed of, or the next postulate of this theory was the speed of light in denser medium is more than the speed of light in rarer medium. इनका ये था, according to this theory, which is incorrect, which is, let me use a marker here, which is incorrect. Okay, therefore the Newton's corpuscles theory is wrong. ठीक है, तो वेव थ्योरी की जब बात करते हैं तो न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी क्या होता है, गलत हो जाता है. फॉर फ्यू ऑफ द processes or phenomenon, this theory looks fine, but for most of the theories, what happens, this particular theory looks wrong. That is why this theory is what, wrong. To explain photoelectric effect, we use photon theory of light, where the photon theory of light was inspired by this also. Okay, so these things were, you can say that they correlate with each other. Okay, चलो आगे बात करते हैं. Now the second theory that we have to study about the nature of light is Huygens wave theory of light. So he assumed that the nature of light will be wave. ठीक है, तो wave nature of light को इसने explain किया. So first postulate was the light travels in form of waves. He suggested that light will travel in the form of waves. These waves travel in all the direction with velocity of light. ठीक है, light wave की बात कर रहे हैं तो speed will be the speed of light. अच्छा, third postulate, he told the wave of light of different color have a different wavelength. So
So different color of light will have different wavelength. This was the third postulate. आगे, initially the light waves were assumed to be longitudinal. पहले क्या माना गया था? It was longitudinal. But later on, while explaining the phenomenon of polarization of the light, the waves were considered to be transverse. Initially, it was considered longitudinal. Then it was considered transverse. Okay. Next, the whole universe with all matter. ठीक है, ये थोड़ा सा ये theoretical part है. Just I wanted to know you this medium. The whole universe with all matter and space is filled with luminiferous medium. That is nothing but that is called as the ether of very low density and very high elasticity. उन्होंने बोला कि light will travel, like he told कि the whole universe with all matter and space is filled with luminiferous medium called ether of very low density and very high elasticity. This was one of the postulate of Huygens wave theory. He assumed that the whole universe with all matter and space is filled with luminiferous medium, जिसका density बहुत कम है and it is having very high elasticity. Why high elasticity? Because to travel wave ना elasticity का जरूरत पड़ता है. ठीक है, इन्होंने कुछ assume किया. Okay, however, this is not a mechanical wave, but still he assumed few of the things based on that only. चलो, next one, sixth one. Huygens theory could explain reflection. So what are the phenomena that this theory can explain? This Huygens theory could explain reflection, refraction, interference, diffraction, polarization. सब explain किया, reflection कर दिया, refraction कर दिया, interference किया, diffraction किया, polarization किया, but couldn't explain photoelectric effect and Compton effect. तो photoelectric effect में क्या दिखता है कि दिखता है सर कुछ ऐसे photons करके आता है, right? So this theory couldn't explain these phenomena. ठीक है, they couldn't explain these phenomena. Okay, so this theory is basically on the wave theory. Like this is basically on the wave nature of light. This actually explains the wave nature of light. The wave theory introduced the concept of wave front. मतलब क्या इन्होंने बोला कि जो wave जो travel करेगा, they'll travel in form of wave fronts. अच्छा, तो what is wave front? तो wave front is nothing but the locus of points. Locus का मतलब सबको पता है. So locus of points or the wavelets. ठीक है, wave का बच्चा wavelets. So locus of the point wavelets having the same phase. देखो, consider okay, in coming slide I'll let you know that. Just remember the definition. A wave front is the locus of points having the same phase. When you join all the points having the same phase, you can have a surface. Okay, you can have a plane surface, you can have a cylindrical surface, you can have a spherical surface. कुछ भी तरीके का surface हो सकता है, ठीक है? So wavefront is what? Is nothing but an imaginary surface which will be obtained by joining all the points having the same phase of oscillation. ठीक है? So that is called as wavefront. तो जब उनको join करोगे, then you are going to get a surface. Okay? So you can also say wavefront is nothing but a surface of constant phase. Okay? Now, what is wavelet? So wavelet is the point of disturbance due to the propagation of light. ठीक है, यहाँ पे ऐसा लाइट का सोर्स है तो इसके कारण कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे होगा. So here some other wave front will be formed. छोटा सा wave will be formed. So this is nothing but the point of disturbance due to the propagation of light. A line perpendicular to a wave front is called as ray. इसको क्या करना है? A line perpendicular to wave front is called as ray. Okay? चलो, तो whatever the wave front that you are having, perpendicular to that, if you are drawing a line, that will be called as a ray of light. अच्छा, what are the types of wave front that you are going to get? So there are actually 3 types of wavefront that we need to study. कौन-कौन सा है? Those 3 types are, if you are having a point source of light. Point source of light का मतलब क्या होता है? If light is being emitted from a point, एक single point है, वहां से light emit हो रहा है. ठीक है? So the kind of wavefront that you'll get is a spherical form. ठीक है? तो you'll get a spherical wavefront. कैसे मिलता है? So I can say that, see, if from here, if I talk about these points, can I say these points are equidistant from the point? So they'll have equal displacement, they'll have equal, like they'll have the same phase, or they will oscillate in the same phase. So can I say if I join all these points, I'll get a surface? In 2D, it look like a circle, but in 3-dimensional space, if you join all those points, you're going to get a sphere. So that is why we are talking about spherical wavefront. So if light wave travel, or if light is being emitted from a point source, it will travel in spherical wavefront. ठीक है? अच्छा. If I draw a line perpendicular to wavefront, so these are the wavefront at different times, right? ये कुछ पहले टाइम पे है, T2 पे है, T3 पे है, T4 पे है,
as the time progresses, these wave fronts will travel in radially outward direction, right? Now the second wave front will form. Now again one more wave front will form, right? So if I draw a line which is perpendicular to this spherical wave fronts, so that line will be the ray of light. But in which direction we should represent? So in which direction? If this is the wave front, so this wave front has moved to this direction. So arrow should be in moving direction. Okay? So if somebody asks you what is the direction of propagation, I'll say direction of propagation will be perpendicular to the surface or perpendicular to the wave front. Okay? So this is what direction of propagation. This is what direction of propagation. This arrow line says direction of propagation. This is also direction of propagation. Because from a point source of light, the light wave will be propagated in all the directions. In all the directions. ऐसे करके क्या सब जगह जाएगा. Okay? चलो. In spherical wave front, that means if the source of light is a point, so the amplitude of light wave depends on the distance. Okay? If you are talking about distance at this point, at this point, at this point, at all these distances, the amplitude will be different. How does it depend? So amplitude of light wave depends on the distance, as A will be inversely proportional to R. A will be inversely proportional to R. Let me put a box here. So A will be inversely proportional to R. What about intensity? So intensity will be inversely proportional to R square. Okay? Intensity of a light wave emitted from a point source will be inversely proportional to square of distance of the point from the light source. इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिए ना, आप सबको पढ़ा ही होगा सबने. चलो, cylindrical wave front क्या होता है सर? So instead of having a point source, if you are having a line source, मतलब क्या है? Light is being emitted from a line. सब जगह, सब सारे डायरेक्शन में ऐसे लाइट emit हो रहा है. So which kind of wave front that you are going to get? Just consider if you are having this kind of line source. यहाँ से सब जगह लाइट जा रहा है. So at equal distance, if you're joining all those points which is at equal distance, can I say you'll get a cylindrical form? So can I say that all those points which are at equidistant from the line, they'll form one wave front. So what is the nature, what is the type of wave front that we are going to get? In case of line source of light, we are going to get a cylindrical wave front. So when the source of light is linear, a straight line source, all the points are equidistant from the source. Therefore 1, 2, 3, देखो यहाँ लिखा है 1, 2, 3 are cylindrical and coaxial with sources as their common axis. So they are the wave front of this line source. So this is the line source. So they are the wave front. Okay? बहुत बढ़िया. यहाँ पे क्या होगा? Here intensity will be inversely proportional to R. Here intensity will be inversely proportional to R. So what about amplitude? Amplitude will be inversely proportional to square root of R. ठीक है? ये सबको पता है ना guys? Do you know how do you find this? Intensity is inversely proportional to R or inversely proportional to R square. Click yes if you know this. Click yes if you know this. यार तुम लोगों ने पढ़ा क्या है फिर? ये वेव ऑप्टिक्स, वेव खत्म हो गया, वेव टाइम भी मैंने बताया था. इंटेंसिटी क्या होता है बच्चा लोग? देख सिंपल सा बात है यार, सब गजनी लोग है. See if you are having a point source like this, ठीक है? Solution I don't know. If you are having a point source like this, ठीक है? ये point source क्या power light को ऐसे बाहर निकालेगा, ठीक है? What is intensity? तो rate of energy incident on unit area normally per unit time. तो consider करो यहाँ पे एक ऐसा surface मैंने assume किया, circular ऐसे ऐसा ही assume किया. So energy will be transmitted in all the directions, right? Energy will be transmitted in all the directions. If I ask you, tell me what is the energy being incident on this surface per unit time? That is the power, right? Power होगा. तो can I say power is constant at each and every point? हर जगह energy same तरीके से बटेगा. What is the area? What is the area of this surface? Can I say area is nothing but 4 pi r square, right? तो intensity क्या हो गया? So total energy which has incident on this surface in one time, in unit time, is nothing but power. So P. So power per unit area is nothing but power per unit area is nothing but intensity. How did I write this? Power is energy per unit time, and energy incident per unit time per unit area is intensity. So I can write power per unit area here is what? Intensity. If I put the value,
तो P divided by 4 pi r square. Can I say power is constant? Right? Power is what? Constant. Energy incident on each and every point is what? Constant. Because uniformly हर direction में जाएगा. At each and every point, energy that these points are going to get are same. So power will be constant at each and every point. 4 pi is a constant. Can I say that? I will be inversely proportional to r square. And if I is inversely proportional to r square, we know that A के बारे में और I के बारे में relation. So A will be inversely proportional to R. Click yes if you understood this, guys. Click yes if you understood this, how intensity is inversely proportional to R square in point source. ठीक है? अच्छा, अभी देखो यही लाइन सोर्स रहेगा तो क्या होगा बच्चा लोग? In this line source, ये ऐसा कुछ लाइन सोर्स है. लाइट हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, right? In all the directions. What is the area on which the light source are being incident? 2 pi RL. लेंथ अगर मान लो सिलेंडर का L ये है तो 2 pi RL, right? So curved surface area is 2 pi RL. So what will be the intensity here? तो power divided by 2 pi RL. Length तो सबका same है. Length for all these cylinders are what? Same. So can I say that here I will be inversely proportional to R only because power is same, length of all those cylindrical wavefront is same. तो I is inversely proportional to R. तो अगर ये है तो A क्या हो जाएगा? So A will be inversely proportional to square root of R. Got it guys? चलो बढ़िया. So अभी याद रखना इसको, ठीक है? This was nothing but the basic definition of intensity, guys. Intensity का मतलब क्या है? Rate of energy being incident on an unit area. ठीक है? Normally to it. उसी का यूज करके हम ये निकालते हैं. चलो आगे बात करते हैं. तीसरा वेव फ्रंट जो हमें पढ़ना है, that is plane wave front. Plane wave front का मीनिंग क्या है? कि when light source are emitting parallel rays or when light is coming from very very far off source. मतलब अगर सोर्स बहुत दूर है, पॉइंट सोर्स ही है, तो बहुत दूर, मतलब यहाँ मान लो ऐसा पॉइंट सोर्स है, ये सब जगह डायरेक्शन में जाएगा. If you are going to look at these rays at a very far distance, they look like parallel lines. They look like parallel lines. So when light source are emitting parallel rays or when light is coming from a very far off sources, what we say, the wavefront that we are going to get is what? Plane surface. क्या मिलेगा? Plane surface. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, that here intensity is independent of R, amplitude is independent of R. Why? What is the reason behind that? Because यहाँ पे देखो हर जगह एरिया क्या है? सेम. हर जगह एरिया क्या है? If you find out the I, तो P divided by A. पावर तो सेम रहेगा, एनर्जी का तो कंजर्वेशन यूज करना ही है. एनर्जी विल नॉट बी लाइक लॉस्ट, राइट? और यू कैन नॉट क्रिएट इट. तो एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है वो तो सेम होता रहेगा. तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ऑन अ सरफेस विल बी सेम यार. तो पर यूनिट एरिया, कैन आई से फॉर दिस सरफेस आल्सो एरिया इज सेम, फॉर दिस सरफेस आल्सो एरिया इज सेम, फॉर दिस सरफेस आल्सो एरिया इज सेम, राइट? So it doesn't matter if you are finding intensity here or here or here, intensity will remain same. That is why we can say that power here intensity will be independent of distance. Intensity at this point, at this point, at this point, everywhere the intensity will be same along that line. What about the amplitude, sir? So amplitude will also be independent of R. तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा. For plane wave front, intensity will not change, amplitude will not change as with respect to distance. Distance के corresponding intensity का change नहीं होता है. अगर आपको YDSC आपने पढ़ा होगा तो याद करो, जैसे ही पॉइंट सोर्स से लाइट निकलता है ना, स्क्रीन पे जाते जाते हम लोग इंटेंसिटी चेंज नहीं करते हैं. रीजन क्या होता है? वी अज्यूम दैट लाइट सोर्सेस कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, राइट? तो बहुत दूर होता है स्क्रीन, तो पैरेलली आ रहा है, तो उनमें हम इंटेंसिटी का चेंज नहीं अज्यूम करते हैं. नहीं तो करना चाहिए था, राइट? डिस्टेंस चेंज किया तो इंटेंसिटी चेंज करना चाहिए था. चलो आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा. मैंने वेव में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे बनाना है. ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा देता हूँ. ये फालतू की जो डेफिनेशन है मैं फिर से नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिवाइज करा देता हूँ होता कैसे, आपको सॉल्व कैसे करना है. देखो, अगर तुम्हारे पास एक लाइट वेव है, ध्यान से देखना, अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसिडर देयर आर टू लाइट वेव्स, ठीक है? L1 है, उसका एम्पलीट्यूड A1 है, ठीक है? दूसरा लाइट वेव L2 है, उसका एम्पलीट्यूड A2 है. दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है. ये क्या है? फेज डिफरेंस. क्या है? फाई है. और ये A1 A2 क्या है? एम्पलीट्यूड है. दिस इज व्हाट दे आर द एम्पलीट्यूड्स. व्हेन दे विल interfere, when two light waves meet at a point at an instant, what will happen? They'll interfere with each other. ठीक? How do we solve this? How do we analyze this situation? By using principle of superposition. बहुत बढ़िया सर. अच्छा, तो इंटरफेरेंस में कैसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करेंगे?
So we say that effect of all the like these two light waves on a single particle or at a single point will be what? The effect of these two will be solved or analyzed using principle of superposition. तो मान लो वो जो रिजल्टेंट लाइट वेव है, रिजल्टेंट लाइट वेव क्या है? रिजल्टेंट वेव जो मिलेगा that will have an amplitude A and that might have a phase difference of alpha with light wave L1. ठीक है, इसको कैसे समझना है, कैसे करना बताता हूं. देखो तो करना क्या है, you have to consider A1 and A2 as vectors. फिर से बता रहा हूं, ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, as vectors. ठीक है, and phi as the angle between A1 and A2. तो जो भी उनके बीच का फेज डिफरेंस है, that you have to consider as the angle between A1 and A2. Okay? तो let us assume something. Consider करो ऐसा कुछ एक consideration आया. This is A1 and this is A2. So amplitude will be given to you for both the light waves. So let us say the angle, the amplitude is A1 and A2, and the phase difference between two light waves is, let's say, phi. So what will be the resultant A? So this will be A1 vector plus A2 vector. So what will be the resultant A, magnitude of A or AR? That will be written as square root of A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos of phi. Okay? अच्छा, तो resultant कैसे दिखाएंगे? तो resultant will look like somehow this. ये हो गया resultant AR, resultant amplitude. अच्छा, so now this AR is making some angle with A1 and A2 as well. So what is the angle made by this AR with A1? तो देखो इधर मैंने लिखा है phase difference between resultant and L1 is alpha. तो मैं इसको क्या दिखाता हूं? Alpha से. So this tan alpha can be written using the exactly vector concept. Tan alpha will be written as A2 sin phi divided by A1 plus A2 cos phi. If you consider no sir A1 के साथ नहीं बताना है, A2 के साथ बताना है, तो A2 के साथ अगर बीटा फेज डिफरेंस है तो you can write tan beta is equal to A1 sin phi divided by A2 plus A1 cos phi. खाली A1 को A2 से रिप्लेस करो, you'll get the answer, right? अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So let us solve a question related to this. So two light waves जिसमें y1 को लेट से मैंने बोला 3 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3. ओके, y2 जो है वो है लेट्स अगेन 3 sin ओमेगा t प्लस लेट्स से 3 पाई बाई 4. ओके, 3 पाई बाई 4. फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड या रिजल्टेंट वेव इक्वेशन लिखता हूं, सब कुछ आ जाएगा. फाइंड द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन. देयर वी कैन गेट द वेव इक्वेशन, एम्पलीट्यूड एंड द फेज डिफरेंस आल्सो. फाइंड रिजल्टेंट वेव इक्वेशन. तो कैसे करेंगे बच्चा लोग? A1 A2 मानना, किसको A1 किसको A2. तो नॉर्मली जो हमारा प्रोसीजर है, ऑलवेज कंसीडर द लाइट वेव, ऑलवेज कंसीडर द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव हैविंग द स्मॉलर फेज एंगल एज A1. आसान होता है, ठीक है. तो किसका फेज स्मॉलर है? तो मैं बोलता हूं देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इधर है, दिस इज ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 4 इधर है. तो मैं बोलूंगा इसका छोटा है तो मैं इसको A1 मान लूंगा. तो दिस इज A1. मैग्नीट्यूड कितना है? 3. अच्छा, A2 का ये हो गया A2 हमारा, राइट. दिस इज A1, दिस इज A2. हाउएवर दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. बट व्हाट इज द फेज डिफरेंस? तो बताओ यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हो गया? फाई विल बी नथिंग बट ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3. सॉल्व करोगे मिलेगा 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3. क्या हो जाएगा इधर? इधर मिलेगा 12, राइट. ठीक है, तो 5 पाई बाई 12. समझ में आया? तो 5 पाई बाई ऐसा मुझे 12 मिला इधर. अच्छा, बहुत बढ़िया सर. तो पाई का वैल्यू मुझे 5 पाई बाई 12 मिला. अच्छा, तो cos 5 पाई बाई 12 मेरे से नहीं मिल पाएगा, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं.
इसको लेटेस्ट से मैं मानता हूं 2π/3, थोड़ा आसान हो जाएगी चीजें। तो 2π/3 अगर मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा 2π/3 माइनस π/3 क्या मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं फेज डिफरेंस, इट विल बी π/3। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब लिखते हैं ए, लिखते हैं क्या लिखेंगे इस पे, हाँ तो बताओ ए आर का वैल्यू क्या मिलेगा, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर ए, ये कितना है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ व्हाट इज द एंगल π/3 कॉस π/3 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। ठीक है, कितना आंसर मिला इधर बच्चा लोग 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर रूट 3, ये मिला एम्पलीट्यूड। अच्छा अब बताओ अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये तो मिला मेरे को A1 का वैल्यू, A2 कैसा होना चाहिए था, तो A2 रहेगा कुछ इस तरीके से, एंगल कितना है π/3। AR क्या होगा, AR कहीं बीच में होगा, कितने एंगल पे होगा, तो ये तो बहुत आसान हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो पक्का 30 पे ही होगा। निकालेंगे कैसे, तो निकाल के देख लेते हैं। तो tan अल्फा क्या मिलेगा इधर, तो A2 कितना है 3 इंटू साइन ऑफ फाई कितना π/3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ π/3। तो यहाँ से अल्फा क्या मिलेगा देख लो इधर, साइन π/3 क्या मिलेगा √3, राइट, सॉरी √3 मिलेगा 1/√3 मिलेगा, 1/√3 मिलेगा, राइट, √3 नीचे नीचे 3 कैंसिल करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा वो π/6 मिल जाएगा। करेक्ट है। अच्छा तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन जो होगा फाइनली क्या मिलेगा 3√3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, अभी यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं सीधा ओमेगा टी प्लस π/6 लिख देंगे, दैट विल बी रॉन्ग, एग्जैक्टली रॉन्ग, पूरा का पूरा गलत। क्यों लिखा, क्यों गलत होगा, बिकॉज देखो ये क्या लिखा हमने, इसके बाद रिजल्टेंट क्या हो रहा है, रिजल्टेंट इज लीडिंग A1 और द Y1 विद π/6, तो फेज ऑफ पहला 1 कितना था, तो पहले का 1 का फेज कितना था, तो क्या हो रहा है ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, इट वाज π/3। नाउ फ्रॉम हियर द रिजल्टेंट इज गेनिंग लीडिंग बाय π/6, तो आई विल से प्लस π/6, तो ऐसा इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मुझे आपको ये चीज बतानी थी, अदरवाइज यू जस्ट राइट ओमेगा टी प्लस π/6, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा रेफरेंस कौन था, A1 था, A1 से कितनी दूरी पे कितना फेज डिफरेंस है π/6, तो वो फेज डिफरेंस मुझे दिखना चाहिए ना, हियर एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड A1, AR एंड A1 इज π/6, तो फेज डिफरेंस बिटवीन AR एंड A1 मस्ट बी π/6, तो यहाँ देखो ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस π/6 माइनस ओमेगा टी प्लस π/3 इज π/6, तो इस चीज का थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अच्छा इसी में देखो अगर बोला जाए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है सर, तो मैं बोलूंगा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए या इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, राइट, तो मुझे एम्पलीट्यूड क्या मिला बच्चा लोग, तो एम्पलीट्यूड जो मिला वो मिला AR इज इक्वल टू, मैं सीधा A लिखता हूं, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ 5। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूं, स्क्वायर रूट को हटाता हूं, A स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अच्छा कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 इनटू कॉस ऑफ 5। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना है, दीज आर व्हाट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दीज आर व्हाट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी आफ्टर interference. Now there are two types of interference that can occur, one of them is constructive, other one is destructive। तो constructive में क्या होगा, तो I and A will be maximum, ये maximum कब होगा, when cos phi will be equal to 1, when this is going to happen, when phi is equal to 2n pi। ठीक है, अच्छा what is the difference, what is the relation between phi and delta x, that means path difference, we know that pi divided by 2 pi is equal to delta x divided by lambda, तो यहां से क्या मिला, delta x is equal to
डेल्टा फाई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू लैम्डा। तो यहां से जो आपको डेल्टा एक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, एन लैम्डा। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या याद रखना है आपको, दैट फेज डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई और डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू n पाई। दैट मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के फॉर्म में होना चाहिए। वेव ऑप्टिक्स में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। So if there are two waves, they are interfering at a point. If their path difference is n lambda in the form of n lambda, they'll interfere constructively. अच्छा, बताओ मैक्सिमम क्या मिलेगा, a max क्या मिलेगा। cos phi को जब 1 पुट करेंगे तो a1 प्लस a2। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिलेगा, तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। ओके, सही है। चलो नाउ मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। तो व्हेन cos phi is equal to -1, राइट। cos phi -1 कब मिलेगा, व्हेन phi is nothing but 2n -1, ठीक है। क्या मिलेगा, 2n -1 पाई और +1 पाई, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आपको लैम्डा क्या मिलेगा, आप खुद चेक कर लोगे तो क्या मिलेगा, 2n -1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये क्या मिलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये मिलेगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। करके देखो आप, तो फाई इज व्हाट, 2n -1 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा। सॉरी, डेल्टा एक्स होना चाहिए, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हुआ, लैम्डा उधर जाएगा, 2n -1 इंटू लैम्डा बाई 2, राइट। तो ये क्या मिलता मुझे, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। हाँ, ये प्लस भी हो सकता है, बट जब हम YDSE पढ़ते हैं ना तो माइनस ही काम कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्म फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट विल बी द मिनिमम इंटेंसिटी, तो ये मिनिमम कितना हो जाएगा, तो a1 minus a2 व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ cos phi is -1। व्हाट विल बी द मिनिमम, सॉरी दिस इज व्हाट मिनिमम एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द मिनिमम इंटेंसिटी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ i1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। So these are the things that you should remember for constructive interference and destructive interference. क्या हुआ सुचित्रा? Is there anything like that? But it would be the same thing. क्या पूछ रहा सुचित्रा? I couldn't understand. चलो, तो ये हमारा काम हो गया, जो आपको याद रखना है वही चीज सब कुछ इधर लिखवाया हुआ है, and I have given everything there on that. ठीक है, चलो try to solve this question. बहुत ही आसान है, सॉल्व क्या करना है अभी तो बताया तुम्हें। देखो, two coherent sources of intensities I1 and I2 produce an interference pattern, ठीक है। Two coherent source of intensities I1 and I2 produce an interference pattern. The maximum intensity in the interference pattern will be just now told you that. क्या है आंसर? चलो, आंसर इज D. What is the maximum intensity? D. Minimum intensity अगर पूछा होता तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो इसका आंसर करेंगे तो चलो, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज दी, जैसा अभी बोला मैंने, यू कैन हैव डेल्टा एक्स एज 2n minus 1 lambda by 2. Similarly, you can write 2n plus 1 lambda by 2 also. यहां पे क्या करते हैं, n का वैल्यू हम कहां से पुट करते हैं, 1 2 3 ऐसा पुट करते हैं। यहां n का वैल्यू कहां से पुट करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे पुट करते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। Because if you are putting n as 0 here ना, it will become minus. Delta x minus का मीनिंग नहीं है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ओके, यस। तो प्लीज यू कैन रिमेंबर दैट ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? चलो, तो प्लीज इसको याद रखना है आपको। नाउ ट्राई टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए मैं पोल लॉन्च करता हूं। आई विल नीड योर पार्टिसिपेशन हियर, सो ट्राई टू गेट मी एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सब लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत लोगों ने किया होगा इसको। इन वेव्स आल्सो वी हैव like solve this kind of question. जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ओके, बट मल्टीपल आंसर्स क्यों आ रहे हैं भाई? 21% A, 5% B, 20% C, 52% A।
जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। If the amplitude ratio of two sources producing interference is 3:5, then the ratio of intensities at maxima and minima is. So what will be the ratio of intensity at maxima and minima? I max and I minima का ratio बताना है। एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, आपको इंटेंसिटी का मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो निकालना है। चलो जल्दी से निकालो। (41% D, 31% C and now 27% A। चैट में विवेक का आंसर आया, सुधनवा, लक्ष्मी, राहुल, सात्विक, सौभाग्य, कुशल, लक्ष्मी, किरण कुमार। चलो कुछ आंसर्स तो आ रहे हैं। लेट मी सॉल्व दिस। तो देखो क्या होगा करेक्ट आंसर। इफ एम्पलीट्यूड रेशियो इज गिवन टू यू, मतलब क्या, A1/A2 है 3/5, तो बताओ I1/I2 क्या हो जाएगा 9/25, राइट। क्यों लिखा मैंने, बिकॉज I is directly proportional to A square, राइट। तो 9/25। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या है, रेशियो क्या चाहिए मेरे को, I max डिवाइडेड बाई I minimum, है ना। तो लिखेंगे I1 सॉरी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 स्क्वायर। ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट। अभी देखो आसान करने के लिए क्या है, मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, रूट I2 से डिवाइड कर लेता हूं। ऐसे पहले तो स्क्वायर किया और लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ I1/I2, द इन डिनोमिनेटर ऑल्सो न्यूमरेटर ऑल्सो, द आंसर जल्दी आएगा, +1 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ I1/I2 -1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। I1/I2 मिला 9/25, सो रूट ऑफ I1/I2 इज 3/5, पुट करेंगे वैल्यू इधर, तो 3/5 +1 डिवाइडेड बाई 3/5 -1 का स्क्वायर, तो क्या इधर मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, है ना। तो आंसर क्या मिला, करेक्ट आंसर इज 16, जो कि सिर्फ 16 ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। ओनली 16 ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर, बाकी सबका गलत हो गया। गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड द मिस्टेक दैट यू हैव डन? समझ में, ये क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड का पूछा है, इंटेंसिटी का पूछा है। सौभाग्य थोड़ा ध्यान से देखो, इंटेंसिटी पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है, सो व्हाई आर यू कैलकुलेटिंग एम्पलीट्यूड इफ इंटेंसिटी इज आस्क्ड टू यू? ठीक है गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द मिस्टेक दैट यू हैव कमिटेड? सो या, सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है, उसका आंसर अच्छे से करना है। ओके, so 16:1 is the correct answer, so option C is the correct answer. Very few of you could have got the correct answer, only 16 of you, बाकी सबका गलत आंसर आया था। चलो इसका आंसर करेंगे। Two sources of light of the same frequency produce intensities I and 4I at a point P when used individually, मतलब individual intensity क्या है, I and 4I, if they are used together such that the light from them reach P with a phase difference of 2π/3, then the intensity at P will be, तो what will be the intensity at P, ये निकालना है। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको। मतलब इंटरफेरेंस होगा, दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस होगा फेनोमेनन। तो द कॉन्सेप्ट दैट विल यूज इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फेनोमेनन को क्या क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। तरीका क्या है सॉल्व करने का, वेक्टर फॉर्म में काम करके। फॉर्मूला क्या है डायरेक्टली आई रिजल्टेंट का, तो I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi, तो उसमें I1 का I2 का वैल्यू पुट करेंगे, phi का वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन विल गेट द वैल्यू ऑफ I at P when they will come at a point with phase difference 2π/3। थोड़ा जल्दी आंसर करो बच्चा लोग।
can see only 8 answers, 9. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है? लेट मी सी आगे आपको। Guys, come on, answer this. Only 22% of you answered. Yeah, so wave of हम पढ़ेंगे dual nature of matter, photoelectricity. Okay, let me answer this for you. I have given you 2 minutes for this, जो कि बहुत टफ नहीं था, 1 मिनट में आराम से आंसर आता, उससे भी कम में। देखो क्या है, तो I at P will be written as I1 plus I2 plus 2 of square root I1 I2 into cos of 2 pi by 3. I1 I2 पुट करेंगे, I1 plus 4I plus 2 into 2I into 2 pi by 3 cos 120 minus 1 by 2, तो minus 1 by 2, 2 से 2 गया तो मिला मेरे को 5I minus 2I. Correct answer is 3I. So option B is the correct answer. Guys, did you understand? So 63% of you got the correct answer. बाकी लोग का तो आंसर ही नहीं आया. Only 27 of you have voted for the answer. बाकी लोग को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है. तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. If you don't remember the formula, no one can help you. ठीक है? आगे बात करते हैं. अगला सवाल. इसका आंसर करो. सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी तो. चलो. Get me an answer for this one. What if two incoherent sources of intensities I and 4I superposed, then the resultant intensity will be. तो coherent source का मतलब क्या होता है? Where phase of or where the phase will not change with respect to time. ठीक है? Where or you can say where the angular frequency does not change with respect to time. और directly बोलो phase उसका times के respect में change ना करे. If phase does not change with respect to time, we call that is a coherent source. Any phase of a light or a wave changes with respect to time, that is called as incoherent wave. So when two incoherent waves interfere, तो क्या होगा resultant intensity? I'm getting पूरा varied सा answer. I'm getting option A, B, C, D मिला जुला पूरा. Okay. %, 26%, 18%, 15%. चलो, let me give you an answer. Actually, कुछ लोगों का करेक्ट है, बहुत लोगों का गलत है. देखो क्या है. See, नॉर्मल जो होता है इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? I जो होगा I1 plus I2 plus 2 of root I1 I2 into cos of phi. But when we talk about incoherent sources, then the phase of all the sources will what? Vary with respect to time. बहुत ही random होता है, सबका मिला जुला. So if you are going to take the average phase difference, तो average that phase difference and all, you will find कि जो cos phi जो होगा ना, जो if you are going to find the average intensity, then this value will become 0. ठीक है? तो फाइनल जो आपको आंसर है, हमेशा याद रखना, जब भी इनकोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे, then the resultant intensity will be addition of all. तो I1 plus I2. यहाँ क्या है? I और ये क्या है? 4I. तो आंसर will be 5I. ओके, चलो ये हो गया इसका आंसर. याद रखना बिल्कुल. For incoherent sources, the resultant intensity will be summation of individual intensities. Okay. Now अभी पढ़ेंगे हम लोग. We are going to study the most important topic of this wave optics, that is the Young's double slit experiment, YDAC जिसको बोलते हैं. ठीक है? तो एक्चुअली इसके साथ कहानी आपने पढ़ाई होगा, इसके साथ नाइंसाफी हुई थी, कोई मानता ही नहीं था इसकी बात. ठीक है, बट नहीं, वो बात की बात है. चलो, बट ये क्या था? एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? वेयर वी आर हैविंग वन पॉइंट सोर्स. ठीक है, टू गेट टू सोर्सेस, टू गेट टू लाइट वेव्स हैविंग द सेम फेज, लाइक हैविंग to get two coherent sources. तो क्या है? Normally all the natural source of light are what? Incoherent source. All the natural sources of light are what? Incoherent source.
So to get two coherent source so that the interference pattern can be visible, he took one point source here, one source of light here, and then from this source of light only, he bifurcated, he divided two different sources. So what happened? Using Huygens principle, that principle suggests that in the near vicinity of a source of light, all the points will act as a secondary source of light. तो होता क्या है? यहाँ पे क्या है? ये हमारा एक single point source of light है. Here we are going to obstruct the light propagation, and we are going to allow them to propagate only from two limited axes, or from two very small slits. Okay? So these light waves will come, so they can only travel, they can only move or pass through these 2 points. So what will happen? Now I'll have only two sources of, only two light waves, or only two sources of light that are coming from a single source. So can I say phase of this light and phase of this light will not change with respect to time, because they have come from the same source? Or you can also say that phase is nothing but omega t, right? So if omega does not change, or omega t does not change with respect to time, that means frequency will not change for a light coming from S1 or light coming from S2. Reason? Because they are coming from the same source. So now I can say these two light waves are what? Coherent sources. So to get two coherent sources, he considered that there should be two slits. Okay, ये दो slits ऐसे लिया, and the actual source of light was single point source. Single point source था, यहाँ से light आया और उनको यहाँ से bifurcate कर दिया. So now I am having two coherent sources. Then he placed a screen which is at a very large distance from these two slits arrangement. तो यहाँ से बहुत दूर पे एक ऐसा screen लगाया. And when he projected the light on the screen, he has observed that there were a kind of pattern of dark and light fringes that has appeared on the screen. That means at the central line he found a bright fringe. Bright means intensity was maximum at this point. Here intensity was minimum, मतलब बिल्कुल zero था, कुछ नहीं था. Why minimum zero? Reason क्या है? यहाँ का भी intensity, यहाँ का भी intensity same है. So intensity of light coming from these 2 point sources are same. So minimum intensity क्या लिखेंगे? I minimum will be equal to I1 minus I2, root I1 root minus root I2 का square, right? What if I1 and I2 are same? What if I1 and I2 are same? If I1 and I2 are same, minimum intensity will become zero. That is why these are the dark fringes that have been observed on the screen. मतलब dark का मतलब क्या? Intensity zero मिला. Dark का मतलब क्या? Here intensity is zero. Here also intensity is zero. Here intensity is zero. At these points, he observed bright fringes. That means maximum intensity of light. यहाँ maximum. So there was a kind of alternate arrangement that he has observed. उसको mathematically कैसे represent किया? तो mathematical representation के लिए क्या बोला? Let us say there are 2 point sources. They are emitting light. They are going at a point. They are traveling along some line, and they are meeting at point P. So at point P, interference will occur. This is light 1. This is light 2. ठीक है? To explain that, to understand it in a very simpler way, he assumed that this capital D will be very large as compared to this small d. This was one of the assumption, that this capital D was very small as compared to this small d. उसके बाद उसने क्या बोला कि if that is the case, then these two lines can be assumed as parallel lines. These two lines can be assumed as parallel lines. If that is the case, what is the path difference traveled, or what is the difference in path traveled by the light coming from S1 and S2? So the path traveled by S1, or the light coming from S1, is S1p. The path traveled by the light coming from S2 is S2p. So what is the path difference? So I'll say if they are parallel lines like this, as a parallel line. What is the path difference? So can I say this is the path difference? That has been explained here. So if they are what? Parallel to each other. What is the path difference? So path difference is nothing but this distance. So if you draw a triangle like this, if the angle made by this light, these lights with the central line is theta. So this, if this is theta, this will also be theta. Kaise bola? So this point P, sorry, this line and horizontal, they are making angle theta. So the perpendicular lines will also make angle theta. So perpendicular to this line is this one. Perpendicular to horizontal is vertical. So this line will also make an angle theta. So this is a right angle triangle. This distance is D. This is theta. So what will be this distance? This will be D sine theta. So from here we observed that the path difference between two light waves coming from S1 and S2 will have a path difference of D sine theta. ठीक है? So path difference मेरे को मालूम चल गया. So depending on this D sine theta, can I say these two light waves will interfere differently? If this D sine theta becomes zero, then that means
path difference is n lambda in form of n lambda, so constructive interference. If this d sine theta, that is path difference, is nothing but lambda, I'll say constructive interference. If this d sine theta becomes lambda by 2, destructive interference. If this d sine theta becomes 3 lambda by 2, destructive interference, right? So can I say this will give us a value, this will give us a feeling that at what point we are going to have destructive interference and constructive interference. How will I decide at which point that will occur? Can I say this theta will tell us the position of the point? This theta will tell us the position of the point. If theta is 0 degree, I'm talking about this point. If theta is theta by 2, I'm talking about somewhere here, right? So this theta will tell us the position of point P on the screen. This theta will tell us the position of point P on the screen. So can I say if I equate this delta x with n lambda, if I equate with this delta x with n lambda, I'll get the theta for those points which will have constructive interference, right? If I equate this d sine theta with 2n plus 1 lambda by 2, then this theta will tell us the position at which destructive interference will occur, right? Following the same analysis, if I write it here. So if I say what will be the position of bright fringes, so I'll say if the at point P delta x is d sine theta, then that at d sine theta, this must be equal to n lambda, because for maximum intensity, constructive interference should occur. And for constructive interference, the condition is delta x must be equal to n lambda. And delta x I have observed is what? D sine theta. So d sine theta must be equal to n lambda. If you put the value of n as 1, you'll get d sine theta as lambda. That means that is one position above the principal, above the central axis. If you put n is equal to minus 1, तो देखो क्या है, यहाँ देखो दिखाता हूँ. You got this, right? This was the bright 0. So if you put n is equal to 1, you'll get the first bright. If you put n is equal to minus 1, you'll get the first bright below the central axis. If you put n is equal to 2, the second bright above the central axis. If you put n is equal to minus 2, second bright below the central axis. If you put n is equal to 0, the central maxima. This is called as the central maxima. ठीक है? चलो बहुत बढ़िया सर. आगे बढ़ते हैं फिर. Yeah. So what was the condition? कहाँ गया? Yeah. So position for bright fringe कहाँ से मिला? तो d sin theta is n lambda. From here I can get the value of theta. But there are some assumptions also. ये आपको याद रखना है. The first thing that you should remember is this one. What are the assumptions that we have taken here? What are the assumptions that we have taken here? Here assumption was small d is very, very less than capital E. This is the only assumption that we have taken. That's it. ठीक है? चलो. इसके बाद one more assumption that you can take. वो क्या होता है? That if theta is very small. Theta is very small. So if theta is very small, you can write this theta can be approximated as tan theta. Or sin theta can also be approximated as tan theta. So you can replace this sin theta with tan theta. क्या करेंगे? You can replace this sin theta with tan theta. So in that case, you can write d tan theta can be written as n lambda. ठीक है? आप यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो आप. If this is theta, then what will be tan theta? So y divided by capital D. Y divided by capital D. So if I put the value of tan theta here as y divided by capital D, I'll be getting small d into y divided by capital D is equal to n lambda. And from this part, if you try to get the value of y, you'll get y for bright is what? N lambda capital D divided by small d. N lambda capital D divided by small d, right? So this is the position for bright fringe. But what were the assumptions that we have taken? That is very, very important, because there have been instances when they have asked two different type of questions. यहाँ पे क्या assumption था? Here assumption, पहला assumption क्या है? First assumption, so that is the same. That means small d is very, very less than capital D. Second assumption that has been taken is what? Y is very, very small as compared to capital D. Sorry. इसको फिर ऐसे पहले लिखता हूँ. Here theta is very
small. That means y is very very small as compared to capital. ठीक है, तो ये वाली पार्ट का एस्टिमेशन करना पड़ेगा आपको. If somewhere you find if this condition is not valid, if this condition or theta, ये छोड़ दो, आप थीटा खाली देख लेना. If this theta is not small, please don't use this. Which formula you are going to use? You are going to use this formula. बिल्कुल सही से बता रहा हूं, दिमाग एकदम खरा रखना. If this assumption is only applied or satisfied, you have to use only this form. ठीक है? If second assumption, that is theta is very small, is also considered, then only this formula will be utilized. ठीक है, इसका एक और मीनिंग क्या है? That means points are very close to the central axis. Okay, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, otherwise you will get wrong answers by blindly following this formula. ठीक है, just by blindly following this formula you will get wrong answers. कब होगा? उसके लिए ये दोनों assumptions, these two assumptions must be satisfied. पहला तो हमेशा होता है, first one you don't have to check, but you have to check the second one whether theta is small or not. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. अच्छा, dark fringes का condition क्या है? So dark fringes means at points where the interference will be destructive, where the intensity will be minimum. कब होगा सर? When delta x will be 2n minus 1 lambda by 2. अच्छा, why did I take 2n minus 1 here, sir? Reason बहुत simple है, ये सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से. देखो यहाँ जो हमने अरेंजमेंट लिखा है ना, उसको नेम करके ऐसा करते हैं. ब्राइट को हम लोग जीरोथ फ्रिंज बोलते हैं. ये क्या है? जीरोथ या फिर सेंट्रल मैक्सिमा है. इसके बाद पहला क्या आएगा? फर्स्ट डार्क आएगा, देन सेकंड डार्क. तो जीरोथ डार्क का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए क्या करते हैं कि जस्ट टू टैली दिस, कि फॉर n is equal to 1 I am getting first dark fringe, we use this formula. ठीक है, if you are going to use this formula and if you put n is equal to 1, तो ये बताएगा सेकंड वाले का. ठीक है, if you put n is equal to 1 here, this will give you the position for second like dark fringe. So that is why at the first dark fringe we use this form. Okay, और कोई जरूरी नहीं है, तुम वो भी यूज कर सकते हो, but there you have to consider that n will start from 0 और उसमें 0th will be the first dark fringe. When you put n is equal to 1, that is the second dark fringe. If you put n is equal to 2, that is the third dark fringe. But here you don't have to do that. यहाँ आपको वो करने की जरूरत नहीं है. The moment you put n is equal to 1, that is the first dark fringe above the or below the central axis. If you put n is equal to 2, that is the second dark fringe. That is why we use this form, not 2n plus 1 form, to understand or to get the position of dark fringe. Okay, chalo. So what is the delta x? Delta x is nothing but d sin theta. So if I put the value of delta x as d sin theta can be equated with 2n minus 1 lambda by 2. इसको इधर ही इक्वेट करेंगे. तो यहाँ से देखो, अगर सब कुछ वैल्यू पुट करते हो तो फॉर्मल अप्रोच क्या है? ये वाला है, with assumption 1 only. This is that approach that you should follow. But again, फिर कंडीशन क्या है? If theta is very small, तो कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? Then we are going to use this one. ठीक है, ये दोनों assumptions आराम से ध्यान से रखना, नहीं अगर समझोगे गड़बड़ हो जाएगा. अच्छा, तो पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज इज व्हाट? 2n minus 1 lambda capital D by 2 small d. What is the position for bright fringe? lambda n lambda capital D by small d. तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको. आगे बात करेंगे, what will be the fringe width? तो fringe width को डिफाइन कैसे किया? How did we define fringe width? So fringe width is nothing but distance between two adjacent bright or two adjacent dark fringes. ठीक है, so दो adjacent bright के बीच में या फिर और two dark fringe के बीच में, whatever the distance that we are having, that is called as fringe width. तो fringe width कैसे निकालेंगे? Let us say this is the nth bright fringe and this is n minus 1th dark fringe. इनके बीच का हमने क्या डिफरेंस निकाला. तो what is that fringe width that we got? lambda capital D by small d. तो इस चीज को याद रखना है आपको. And what is fringe width? lambda capital D by small d. एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूजन देखो कहां होता है.
कभी कभी क्या होता है लैम्डा डी बाई डी याद होता है ना, तो लोग ऐसा सीधा लिखते हैं लैम्डा डी बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना कि कैपिटल डी कहाँ है, स्मॉल डी कहाँ है। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान देना। अगर याद करना है दूसरे तरीके से, यू कैन चेंज दिस स्मॉल डी विद सम स्मॉल a value for your convenience. You can do that. Why am I saying so? Because I have seen so many guys who will write y for bright fringe is nothing but n lambda small d by capital D. वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल डी क्या होता है न्यूमरेटर में, स्मॉल डी इज इन द डिनोमिनेटर। हियर आल्सो कैपिटल डी इज इन द न्यूमरेटर, स्मॉल डी इज इन द डिनोमिनेटर। तो डी बाई डी में लोग कुछ समझ नहीं आता कौन सा डी ऊपर कौन सा डी नीचे, एग्जामिनेशन में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड which d is above, कैपिटल ऊपर है और स्मॉल नीचे है। To avoid this confusion, you can replace this small d with b and remember lambda d by b. Or you can replace this small d by a and you can remember lambda d by a. It's up to you. Whatever looks fine to you, whatever looks convenient to you, you can do that. ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, थ्योरेटिकल पूछता है, सीईटी में, नीट में, सब जगह पूछा है। ये विड्थ का वही मतलब जो बताया गया, ठीक है। अच्छा, नाउ विल स्टडी द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है, पहले पता करते हैं एंगुलर पोजीशन क्या है। व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ एनी फ्रिंज, मतलब थीटा का वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो वही चीज है, ये मान लो साहब, इफ दिस इज अ स्क्रीन, this is the central axis. If this is a point where let's say bright fringe has occurred, W2 has occurred. So from here you will draw a line. This is that theta, right? So theta for second bright fringe is nothing but this value. So लिखूंगा y divided by this length, capital T. Why did I assume that? Reason, I have assumed theta is very small. So this theta can be assumed as tan theta also. So tan theta will be perpendicular by base. So perpendicular is y2 divided by t. Similarly, for nth bright fringe, for nth dark fringe, answer क्या होगा? For any of the nth bright fringe, what is the answer? Right? And what is the value of nth bright for? What is the position for nth bright? तो पुट करेंगे उसका वैल्यू n कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, सबका वैल्यू पुट करेंगे, क्या मिलेगा? n लैम्डा बाई स्मॉल d. Similarly, for dark fringe क्या हो जाएगा? नहीं, पहले मैं बताता हूं n plus 1th bright fringe का क्या होगा एंगल पोजीशन। So for n plus 1th bright fringe, I'll say y for n plus 1 divided by capital D. And what is the value for y plus n plus 1? So instead of n, we have to put n plus 1. So put n plus 1 lambda capital D by small d divided by capital D. So d cancel. I got n plus 1 into lambda by d. So now what is the angular width of the fringes? What is the angular width of the fringes? तो यहां मिला मान लो मेरे को n, आगे मिला मुझे n plus 1. n plus 1. What is the angular width? So this angle, this is what the angular width. So angular width क्या है? Angular width is nothing but the angular position of n plus 1 minus angular position of n. So if you find that value, you are going to get lambda by small d only. क्या मिला मुझे? इसका मीनिंग क्या मिला? angular width का मीनिंग क्या मिला? lambda by small d only. अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हो? बीटा फिर क्या लिखा है? बीटा आप तो पता है आपको सबको. What is beta? Angular width. What is beta? Beta is angular width. Can I explain in terms of beta? So you can do that. So theta can also be written as lambda by d को क्या लिख सकते हो? Beta by capital D. तो ये फॉर्म आप याद रखना. So angular width is lambda by small d or beta by capital D. So please do remember this for angular width of any fringes. Dark है, bright है, सबको ध्यान देना. Because width of dark fringe and width of bright fringe, they are what? The same. And the value for that is what? Lambda capital D by small d only. अच्छा, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, सिंपल सी बात है, अभी भी पढ़ा है हमने. इंटेंसिटी में क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव कमिंग फ्रॉम S1 and S2, they are what? Same. The intensities of light that are coming from S1 and S2, they are what? Same. So if this is I1, this is I2, they are what? Equal. So if I consider I1 and I2, they are same, they are equal to I0. So final intensity will be 4 I0 cos square 5 by 2. What is I0? Intensity of individual light. ठीक है, ये याद रखना. अच्छा, if somebody asks you what is the maximum intensity, मैं बोलूंगा sir this I will be maximum when cos square 5 by 2 is 1 or maximum. What is the maximum of cos square 5 by 2? 1. So what is the maximum intensity? 4 I0. That means
4 times the individual intensity is the maximum intensity. क्या है वो? 4 times the individual intensity is the maximum intensity. And when that will happen? When those two waves are in same phase. मतलब n2 n pi के फॉर्म में रहेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. When you get maximum intensity, when they'll interfere constructively. ये तो सबको पता है, बस ये खाली याद रखना है. होता क्या है? 4I0 is the maximum intensity. मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा? लड्डू. सिंपल सी बात है भाई. I is equal to when this will be minimum. So when this will be minimum, what is the minimum value of cos square 5/2? 0. Because this is a positive number. This is not cos only. तो क्या minimum value इसका है? 0. So when this will be 0, I will be 0. So what is the minimum intensity in YDSE that you are going to get? That is 0. When that is going to happen? When the light waves will interfere destructively. And what is the condition for that? The cos 5/2 must be 0. So 5/2 must be odd multiple of 5/2, right? तो n minus 1/2 half pi करेंगे, और otherwise आपने पढ़ा ही है. So delta x must be equal to 2n minus 1 lambda by 2. That is the condition for, that is the path difference for destructive interference or dark fringes. अब सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन. बहुत देर से बकर बकर मैं बोल रहा हूँ, अभी आपकी बारी. Now you solve some questions here. Try to get the answer for this. In Young's double slit experiment, an interference pattern is obtained for lambda is equal to 6,000 angstrom coming from two coherent sources S1 and S2. At certain point P on the screen, third dark fringes form. ठीक है? At a certain point P on the screen, third dark fringes form. Then path difference S1P minus S2P in microns is, micrometer में बताना है. वैल्यू पुट करना सही से, गलत मत करना. सिर्फ 2 लोगों का आंसर है, अभी 3 हुआ. बढ़ाओ बच्चा लोग, जल्दी बढ़ाओ. पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे. क्या है पाथ डिफरेंस? डेल्टा एक्स. क्या होता है? लैम्डा बाई 2, है ना? n का वैल्यू पुट करो. क्या, कौन सा n है? A certain point P on the screen, third dark fringe. Put the value of n as 3. क्या करेक्ट आंसर आएगा? 3 into 2 into 3 minus 1 into lambda कितना? 6,000 divided by, आंसर is 5/2 into 6,000. ठीक है? ये क्या है? 10 to the power minus 10, है ना? But you have to convert this into micron. So 10 to the power 6. करेक्ट? अच्छा, सॉल्व करेंगे. सो ये तो हो गया आपका जाके इधर 3000 into 5, that means 1.5 के करीब कुछ आएगा. बाकी तो आप समझ ही लोगे. ठीक है? So correct answer is कितना हुआ? 1.5 microns. Option B is the correct answer. 84% of you got the correct answer. Well done. इसको सॉल्व करेंगे. चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका. पहले पाथ डिफरेंस देख लो, फिर फेज डिफरेंस समझ लेना. Tell me what is the correct answer for this question. Again it has the same type of question, same kind of condition. Third minimum intensity कहाँ होगा? In Young's double slit experiment, when two light waves form third minimum intensity, they have path difference of, what will be the path difference between the two light waves having minimum intensity at a point? चलो तो आंसर तो मिल रहे हैं कुछ. क्या होगा बच्चा लोग? क्या होता है पाथ डिफरेंस? 2n minus 1 lambda by 2. n क्या है यहाँ पे? थर्ड. तो आंसर क्या मिला? 5 lambda by 2. So option D is the correct answer, right? चलो अब इसको सॉल्व करो. Guys, try to solve this question and get the answer. Two slits are separated by a distance of 0.5 millimeter and illuminated with light of lambda is equal to 6,000 angstrom. If the screen is placed 2.5 meter from the slits, the distance of third bright image from the center will be.
See, how would I assume that second assumption has been considered here? देखो, distance of third bright image from the center is in millimeters and capital D is in meters. Simple सी बात, the second assumption has also been considered because मैंने क्या बोला था, theta will be very small, तभी वो formula use करेंगे. So if this distance of third bright fringe from the center is in millimeters and distance of screen is in meters, तो क्या हो गया? That theta will be very very small. तो हम लोग we can use that formula. So I'm getting 44% or 40% in C and D, 18% B. बाकी लोग जल्दी सॉल्व करो, सिर्फ 20% of you have responded. 23%, 24%. Guys, you just have to use the formula. That's it. Formula use करके आंसर करना है, बस काम हो जाएगा. So two slits are separated by a distance of 0.5 millimeter and illuminated with light of lambda is equal to 6000 angstrom. If the screen is placed 2.5 meter from the slit, the distance of third bright image from the center will be. Bright मतलब bright fringe की बात कर रहे हैं, constructive interference, right? तो formula क्या होता है? Y3 will be equal to 3 lambda capital D by small d. Correct है? Put करेंगे values. 6000, 10 to the power minus 10, capital D 2.5, small d कितना है? 0.5 into 10 to the power minus 3, है ना? मुझे convert किसमें करना है? I have to get the answer in terms of millimeters, 10 to the power 3 also, right? बहुत बढ़िया. So this 10 to the power minus 3, ये तो पहले छोड़ दो, पहले values देखते हैं. तो क्या हो गया? ये 0.5 is nothing but 1/2, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 और इधर मल्टीप्लाई किया 2, तो 2.5 into 2 is what? 5. 5 into 18 is what? 90. तो कुछ 9 के फॉर्म में आएगा. तो which is the correct answer? D. Values आप ऑर्डर देख लो, क्या है? 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 6, then again 10 to the power 3, 10 to the power 9, into 10 to the minus 10, 10 to the minus 1, right? और ये मिला 90, तो 90 into 10 to the power minus 1 is nothing but 9 millimeter. खत्म. ठीक है बच्चा लोग, तो not all of you but 54% of you have got the correct answer. बाकी लोग का गलत आया था, देखते हैं अभी. Get me an answer for this one. बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल बच्चे वाला सवाल. Fringe width decreases with increase in which value will be increased to decrease the value of fringe width? फॉर्मूला पुट करके सीधा आंसर करेंगे. तो fringe width क्या होता है? We represent that with beta. Beta is lambda capital D by small d. To decrease this, you have to decrease lambda or d. But what we have to do? We have to increase. मतलब if you increase small d, b will decrease. If you increase small d, b will decrease. So answer is D. C. ठीक है? बहुत बढ़िया. So आज के लिए बस इतना ही. It's already 1:44. So tomorrow we are going to finish this wave optics. क्या पढ़ेंगे उसमें? Diffraction, that is Fraunhofer diffraction, and then we'll study polarization. That's it. That will be the end of this wave optics. ठीक है? और yeah, I think tomorrow I'll be starting the dual nature also. Photoelectric effect will also be started tomorrow only. So in half an hour that polarization and Fraunhofer will be completed. After half an hour we are going to study dual nature. So please do attend that class. That is very very important. Very easy chapter that chapter is. ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है. उसको मैं लॉलीपॉप चैप्टर बोलता हूँ. तो थोड़ा अच्छे से आइएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा चीजों को. एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स टिल YDSE. ठीक है, टिल YDSE ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. Still I'll say please increase your participation in the class. बहुत boring होता है आपका class. Sorry to say that, but yeah, it's actually boring. Very few of you used to respond to the answers. Only 50% of you are responsive. Other तो पता नहीं क्या कर रहे हो. Anyway, I hope you guys will do well in your examination. So prepare well for your examination. Stay safe, stay healthy, and enjoy money. Bye bye guys. Take care.